Alright, students, we have done the retail marketing strategies, and last lecture we have discussed all the planning process which is involved in selling the product through retail outlet. Today we have agenda of discussing the CRM in retailing, and more particularly this particular chapter is under the retail management strategy part 2, in which what we are going to do, we are going to understand the importance of CRM in retailing, and then retail value chain and retail life cycle. We will understand the role and challenges of HR in retailing. We'll examine the consumer behavior and buying decision process, and lastly the customer service as a part of retail strategy. Now, relationship marketing. Why we are discussing relationship marketing? Because it is involving actually customer loyalty, customer satisfaction, and long lasting relationship with the customers. So it will include all those feedbacks, it will include all those customer reactions, and we'll have the combination of strategies in relationship marketing to ensure the customer loyalty and happiness. So this way, if we talk about very first concept, that is CRM, customer relationship management, what is that? You have to employ a combination of practices, strategies, and technologies in order to have the interaction with customers. All these things are coming in the broad concept of CRM. And in order to strengthen the interaction with the customers, you have to promote client retention and increase the sales. सो सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरएम की अगर रिटेलिंग में बात करी जाए कि रिटेलर क्यों कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहेगा, और थ्रू वेरियस टेक्निक्स क्यों कस्टमर का डेटा जो है वो मेंटेन करेगा, तो द थिंग में कम एज योर थिंग में कम एज द कस्टमर कन्वर्जन वेरी फर्स्ट. सो कस्टमर कन्वर्जन क्यों? क्योंकि रिटेलर को क्या करना पड़ेगा, रिटेलर को बाय एनी मीन्स ही हैज टू कीप द कस्टमर्स विद हिम. So that way, if we talk about CRM perspective, remarketing product, सेम कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ सेल पे कुछ रीमार्केट करना पड़ेगा, क्रॉस सेल करना पड़ेगा, एड ऑन परचेजेस करने पड़ेंगे, उन्हें साइन अप कराना पड़ेगा फॉर न्यू यू कैन से newsletters, emails, and all this. We are talking about the big brand retailers or organized retailer. सेकेंडली कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि सीआरएम की नीड क्यों पड़ती है, सिग्निफिकेंट क्यों है सीआरएम, क्योंकि कस्टमर को आपको सिर्फ एक्वायर नहीं करना है, आपको उसे रिटेन भी करना है. तो रिटेन करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना, कस्टमर्स को कैशबैक ऑफर्स देना, कस्टमर्स को एक तरह से होम डिलीवरी देना, उनको आफ्टर सेल सर्विस देना, ये सब कस्टमर रिटेंशन के स्ट्रैटेजीज में आते हैं. इट विल स्ट्रेंथन दी कस्टमर्स लॉयल्टी ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सीआरएम की वजह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्लाइंट पॉइंट्स बनेंगे, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप बनेगा, विच विल encourage the customer loyalty, and this way what will happen, that retailer will benefit from repeat orders, repeat purchases, which will boost sales and profitability also. सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से कस्टमर्स हैं आपके पास, वेदर दे बिलोंग टू वेजिटेरियन कैटेगरी, नॉन वेजिटेरियन, फर्स्ट टाइम परचेजर है, रेगुलर परचेजर है, सीजन्ड बायर्ड है, फ्रीक्वेंट बायर्स है. तो इस हिसाब से योर स्ट्रैटेजीज विल बी रेडी अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू grab their attention in order to sell the products. कस्टमर डेटा, बिकॉज कस्टमर का जो प्रोफाइल, डेटा ड्रिवन रिटेलिंग हम कहते हैं जिसमें आप लोग क्या करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो कस्टमर का लाइफ साइकिल, कस्टमर का एंटायर हिस्ट्री, एंड यू वांट टू कैटर दोज कस्टमर्स विच आर देयर विद यू सिंस your time when you started the retailing, and then every time if you have the regular customer, that time you will aim for giving them better experience also. So this way, if we talk about CRM in retailing, the significance of CRM in retailing will be all from the customer point of view, sales improvement point of view, and profitability point of view. Then if we talk about retail value chain, so retail value chain is what? It is something which is the series of tasks that a business completes before delivering product to the
clients. So this way value chain is made from the steps of ideation of the product to the point of distribution. वैसे केस में वैल्यू चेन जो है इसमें आपके काफ़ी सारे ऑपरेशंस और सपोर्ट डिसीजंस आ जाते हैं, जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं कस्टमर्स को कि कस्टमर्स कॉन्फिडेंट हो जाएं और एक तरह से उन तक प्रोडक्ट पहुंचे। तो माइकल ई पोर्टर ने कैटेगराइज किया है वैल्यू चेन कंसेप्ट in the form of all these things which are given in the diagram also. So we have inbound logistics, production, outbound logistic, marketing, sales and service. So this is something which is the flow of goods and material from the vendor state to the consumption, last consumption. So it will include what? Obviously, it will include the primary activities like production, physical object, and also inbound logistics, in which you have the raw material which are traveling from vendor to the operation houses. So all operations, they have the procedures and action that transform inputs into goods and services. और प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी होता है कस्टमर को विद द हेल्प ऑफ आउटबाउंड सर्विसेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये पूरा प्रोसेस जो है गैदरिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन और गुड्स का है। तो ऐसे केस में आपका जो कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट असिस्टेंस है, ये दोनों यहाँ पे कैटर होता है। और अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्राइमरी एक्टिविटीज की, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज के साथ चलाए जाते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, सप्लायर्स की जरूरत है, आपके फैक्ट्री आउटलेट की जरूरत है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की जरूरत है, R&D की जरूरत है। तो ये सब चीजें जो है आपकी एट द एंड ऑफ द डे सपोर्टिंग सर्विसेज बन जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके जो जनरल मैनेजमेंट है, फिनेंस, अकाउंटिंग, HR रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देखे जाते हैं। तो प्राइमरी में आपकी अगर प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, तो सेकेंडरी में आपके सपोर्टिंग सर्विसेज में आपका पूरा ऑफिस ऑपरेशन आ जाता है। और रिटेल जो है, रिटेलर गेन करते हैं इस सब वैल्यू चेन से, बिकॉज यहाँ पे वो लोग अपने जो इनपुट्स हैं वो मंगाते हैं लोगों से, उसको अपने सपोर्ट डिसीजंस के साथ आउटपुट को जो है वो एक तरह से फिनिश प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो दिस वे दे कैन एस्टेब्लिश द कॉस्ट एडवांटेज ओवर द रिस्क फैक्टर ऑल्सो। So these all things are hand in hand known as the retail value chain, because retailer तक finished product पहुंचता है, and but it comes from the primary activities of logistics and production, and then it goes till the supporting services done by the companies. So finally the product is being sold to retailer for for selling it to consumer who buy for the final consumption. टॉकिंग अबाउट रिटेल लाइफ साइकिल, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। रिटेल लाइफ साइकिल में क्या आता है, कुछ ऐसे रिटेल फॉर्मेट्स आते हैं जिसमें आप लोगों के 4 स्टेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं। एक तरह से 4 स्टेजेस यूज होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ, चौथा है मैच्योरिटी, तीसरा है मैच्योरिटी एंड चौथा है डिक्लाइन। ये हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर इंट्रोडक्शन में देयर इज द रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। एक नया रिटेल फॉर्मेट जो है अपना बिजनेस चालू करता है न्यू फॉर्म में, और एक तरह से उसको इनोवेट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मर्केंडाइज डिस्प्ले करना पड़ता है, विजुअल मर्केंडाइजिंग के हेल्प से उसको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेज जो है वो है ग्रोथ स्टेज, जिसमें कंज्यूमर्स जो हैं वो एम्ब्रेस करते हैं नए नए रिटेल स्टोर्स और अलग अलग रिटेलर्स, रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे खास ध्यान देना पड़ता है कि जो कंपटीशन एंटर हुआ है उसको फाइट करने के लिए, अपना सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं। तो व्हाट हैपेंस दैट कस्टमर्स ऑफ non-innovative companies, they aim to choose products and services from those retail organization which introduce the innovation. Then maturity, because यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं आपके सेल्स और रिटेलर्स जिनके पास एक्सेलेंस होता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग द न्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस, वो जो है वो आगे चले जाते हैं और बाकी के जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैच्योरिटी ऑफ सेल्स देख लेते हैं।
तो ऐसे केस में योर सेल्स आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. एंड लास्टली डिक्लाइन, जहाँ पे मार्केट बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज कस्टमर परचेजिंग हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, फ्रेश फॉर्मेट्स मार्केट में आ जाते हैं, खासकर कुछ लोग ऑनलाइन कंपनी से डिलीवर कराते हैं चीज़ें. तो ऐसे केस में जो ऑलरेडी रिटेल फॉर्मेट है वो हो जाता है आपका आउटडेटेड. तो आपका जो कंपटीशन है उसमें लूज होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो रिटेल लाइफ साइकिल में यू हैव 4 stages, नेमली introduction, growth, maturity, and decline. This is the diagram of the same. Next, we have HRM in retailing. Now, what is HR? Human resources. Does retailer have human resources? Yes, there are many organized retailers, those who have lobby of employees working with them as storekeepers, as salesmen, as front officers. Not only that, but in organized retailing, unorganized retailing also, there are employees which are attached to the small kirana shop and small traders. So this way, if we talk about the growing importance of HR in retailing, we can always talk about the large retail formats which have their priority is to expand, their priority is to build their brand. So they depend upon the workforce, they depend upon the talent, they depend upon the high performing employees who can amplify their competitiveness by being very good salesmen, by being a very good, you can say, backbone of the sales force management. So this way, if we talk about the HR tactics, yes, HR department in retailing is the functional operational department, which is actually responsible for bringing certain changes in the uh, management of overall store. So we can say that for them, employee hiring, for retailer, big retailer, the employee training and development, all those things are very important. So, if we talk about the challenges of HR or challenges faced by HR in retailing, very first challenge is to retain the employees. So, when they retain the employees, their biggest issue is to give them proper perks, give them proper pay and benefits, provide them work satisfaction, because numerous retailers, they do a lot to retain recruit good wage workers, but they face the challenge of retaining them because the attrition rate is very high. Then you have workforce management. Now when we talk about workforce management, the staff, they are juggling up with variety of duties and jobs. So employers duty is to take care of them, to train them, to maintain transparency over their compensation packages, and वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बहुत जगह यूज़ होते हैं जिसमें एक तरह से पूरा एचआर सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैनेज करा जाता है. So two important challenges. One is retention of employees. Other one is workforce management. And talking about what we have discussed so far, so we started with CRM significance, and CRM significance is important from customers' point of view, also from improving sales and profitability. वैल्यू चेन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज वी हैव डिस्कस्ड. रिटेल लाइफ साइकिल की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन एंड विद द डिक्लाइन एज इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. बट यहाँ पे बात करी जाती है रिटेल फॉर्मेट्स की.
And then we have HRM, growing need of HRM in retailing. So we have challenges faced as retention of employees and workforce management.